नमस्कार, सत श्री अकाल, salam, hello दोस्तों. So once again, I'm your friend Alok Verma back with next episode of our regular weekly series, Weekly Market Outlook. और आज तो बहुत स्पेशल एपिसोड है because we are starting a brand new financial year. So it's a special day, special occasion, especially for people who are into business or into financial markets, just the way we are. Last year has been nice and good. Uh, Little tough actually, really speaking. Let me not mince words. People have not really made money, most of them. The portfolios have bleeded, but hopefully things are better this year. And let's go with it. And we are talking of now outlook for a week which is starting 3rd of April and ending on 7th of April. सो लेट्स फॉर दोज हु नो मी, जैसे आप जानते ही हैं, मैं हर बार जो है अपनी एनालिसिस को ब्रेक करता हूँ दो पार्ट्स में, बेस्ड ऑन डेटा एंड न्यूज आइटम्स एंड बेस्ड ऑन टेक्निकल इनपुट्स, राइट. उसके बेस पे फोकस करते हैं एंड आई डू दिस एनालिसिस एवरी वीक एंड आई शेयर इट विद ऑल ऑफ यू फॉर द लार्जर गुड. सो लेट्स गो देयर, लेट्स सी व्हाट आई हैव फॉर यू दिस वीक. सो अगर हम न्यूज़ और डेटा की बात करें, और इंडाइसेस सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है. सो निफ्टी बैंक निफ्टी हैव बीन सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव फॉर द वीक. बहुत अच्छा वीक गुजरा है एक्चुअली. लास्ट 2-3 days हैव बीन रियली गुड फॉर द मार्केट्स. So Nifty has been up 2.5%, Bank Nifty has been up 3.08%. Very good. इंटरनेशनल इंडाइसेस की बात करें तो पिक्चर और भी अच्छी है. S&P 500 हैज बीन अप 3 पॉइंट ऑलमोस्ट 3.5%, और नैस्डैक भी करीब करीब उतना, थोड़ा सा कम, 3.37% नैस्डैक अप हुआ है. तो ऑन द होल पिक्चर हैज बीन नाइस इन द लास्ट वीक. FII DI डेटा की बात करें, सो FII एंड DIs have been net buyers for the week, right? And for the month, in fact, you can see January written here, it's supposed to be March. For the month of March, as such, both have been buyers again. FIIs have been largely flat, सिर्फ almost 2000 crore का उन्होंने buying किया है. But DIAs have bought significantly in March. My apologies, it's not January 22, it's supposed to be March 23. I don't know why, in what mind I was. I wrote January 23 or 22. Apologies for that. सो ये सारे फिगर जो है INR करोड़ में है. सो DIs have been buying, FIs have been buying. For this week also they've been buying, and for the last month of March 23 also they've been positive. इंडिया विक्स काफी गिरा है इस वीक, ऑलमोस्ट साढ़े सवा 15%, 15.12% डाउनवर्ड डिक्रीज हुआ है, एंड इट हैज कम टू लेवल ऑफ 12.94, विच इज क्लोज टू historical normal levels, slightly on the lower side, but historical normal levels. So, which is a good sign. This VIX, is a fear index. इसको बोलते हैं. अगर VIX high हो तो that shows that there is a problem in the market, there is an issue in the market. So, or at least there's a fear in the market, if not exactly a problem or an issue. So, because of VIX being in the normal range, that shows market there is a confidence and stability in the markets. All right. So, let's move forward. Crude oil has shown a jump, 7.3% increase हुआ crude oil. Crude oil, drives global economy, impacts global economy in so many ways. So it's been recorded at the level of 79.73. That's a closing level. Significant jump upwards. That basically is an anticipation of better economic activity in the world market. So लगता है world का एक anticipation है कि economic activity return हो रहा है और ज़्यादा crude का जरूरत पड़ेगा, right? So which is in some sense a good sign. Generally crude going up is not good for India, we all know that. Okay. फेड ने पिछले हफ्ते 25 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, राइट. Now this is very tricky. I feel it was more tricky than ever before this week's increase or whatever outcome Fed wanted. Why? Because we know Fed ने कई बार interest rates बढ़ाए हैं पिछले कई months में, and that has leading to some stress in the markets, or potentially तो stress है, right? And there have been talks of US market going into recession, being on brink of recession, बिल्कुल recession के किनारे पे खड़ा है. और दो बैंक्स फेल हो गए हैं लास्ट वीक, यूएस बैंक्स, the Silicon Valley Bank SVB and Signature Banks, they have failed, and government has had to intervene and rescue them. Even Switzerland में one of the biggest banks of the world, Credit Suisse, that has failed, and UBS और स्विस गवर्नमेंट ने मिलकर उसको रेस्क्यू किया है. नो इस बैकग्राउंड में, थिंक अबाउट इट, इस बैकग्राउंड में
इट वॉज डिफिकल्ट टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, राइट? एवरीवन सेड कि ये इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ गए हैं, इसकी वजह से बैंक्स फेल हो रहे हैं, इट कैन लीड टू बिगर प्रॉब्लम्स इन द इकोनॉमी, राइट? सो देयर वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन फेड not to increase interest rates. But think about it. अगर फेड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करता तो क्या होता है? इज इट लेटिंग अप अगेन इट्स फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन? बिकॉज फेड इंटरेस्ट रेट क्यों इंक्रीज कर रहा है? दे वांट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल नहीं आई है, तो अगर फेड इंक्रीज नहीं करता है तो इसका मतलब क्या ये मैसेज जा सकता है कि फेड इज सरेंडरिंग, फेड ने हथियार डाल दिए, इन्फ्लेशन से फाइट नहीं कर रहा है? या ये भी मैसेज डाल सकता है कि फेड फाइट तो करना चाहता है, इन्फ्लेशन ज्यादा है सबको पता है, पर फेड इंटरेस्ट रेट इसलिए नहीं बढ़ा रहा बिकॉज मे बी, जस्ट मे बी, देर आर मोर बैंक्स दैट आर अंडर स्ट्रेस, एंड फेड को ये पता है, इसलिए फेड नहीं चाहता कि उनको और प्रॉब्लम आए, और एक तरह से उन बैंक्स को बचाने के चक्कर में फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है। ऐसा कुछ मैसेज भी जा सकता है अगर फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाता। सो फेड हैज टेकन अ मिडिल पाथ, ज्यादा नहीं बढ़ाया इंटरेस्ट रेट बट कुछ बढ़ाया है। सो दैट सेंड्स अ वेरी गुड मैसेज दैट फेड इज continuing to fight inflation. It wants inflation to come down. Inflation को तो कंट्रोल में लाना ही है. At the same time, Fed does not want to disturb the markets, right? So I feel it's a very good and balanced decision by the Fed. And in fact, markets have also gone up after this decision. So markets have also given a thumbs up to this decision. Okay, friends, wonderful. Now, this is a special section for us. We know our friend Gyan Kaur. बहुत देर बाद ज्ञान कौर हमारे चैनल पे आई हैं, एंड ज्ञान कौर, जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं ज्ञान कौर इज अ वेरी वेरी नॉलेजेबल फ्रेंड ऑफ आर्ट्स, एंड नाम के बिल्कुल सार्थक करती हैं अपने नाम को, समझ लीजिए ज्ञान की गंगा ही है, राइट? तो उनसे हम जब मौका मिलता है उनसे हम बात करते हैं, उनका विचार जानते हैं। सो वी कॉट अप विद ज्ञान कौर दिस वीक, एंड स्पेशली आई रीच्ड आउट टू हर बिकॉज हमारा फाइनेंशियल ईयर नया शुरू हो रहा है, तो आई वांटेड टू टेक हर, capture her inputs, her opinion on outlook for the midterm at least, right? So I, that's exactly what we asked her कि आपका आउटडोर मिड टर्म आउटलुक के बारे में क्या विचार है स्टार्टिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। सो शी इज वेरी क्लियर. Gyan Kaur, she believes markets could trend upwards from here, though it may not be one way single upward move, but markets को दिशा ऊपर की दिख रही है, and she's given us very good reasons for that. She says the markets have done some base building the last month, right? They took support at 16,800 kind of levels, which is a very strong support, and काफी देर से market ने base building कर लिया है. While quarterly annual और and annual results जो कि अभी आने वाले हैं next week onwards, right? They will be very keenly watched and they will provide a direction. But historically markets, एक बहुत important बात है, Indian market historically, at least the best that we know of, कभी भी 4 महीने लगातार डाउनवर्ड बंद नहीं हुआ, नेगेटिव में, रेड में बंद नहीं हुआ है. इस बार ऑलमोस्ट हो गया था. दिसंबर, जनवरी, फरवरी क्लोज्ड इन रेड, मार्च वाज इन रेड, क्लोजिंग इन रेड फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस. ये तो लास्ट डे को, लास्ट 1 आवर में जो रैली आया है उसकी वजह से वी मैनेज टू क्लोज प्रैक्टिकली फ्लैट, राइट? थोड़ा सा बिल्कुल ऊपर है, प्रैक्टिकली फ्लैट. सो हिस्टोरिकली 2 या 3 बार ऐसा हुआ कि 3 महीने लगातार मार्केट्स आर क्लोज डाउन, बट इन दोज केसेस फोर्थ मंथ हैज शोन अ सिग्निफिकेंट जंप. यहाँ 4 महीने हो गए. सो प्योरली इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, reasonably good positive movement in April seems very high, right? And we've seen some indicators have turned very positive in the last few days, right? मार्केट की वैल्यूएशन बहुत इंप्रूव हो गई, टाइम करेक्शन हुआ, रिजल्ट अच्छे ही आते रहे कंपनियों के, पर मार्केट नहीं बढ़ी है पिछले 1-1.5 साल से, तो मार्केट वैल्यूएशन हैव इंप्रूव सिग्निफिकेंटली. ग्लोबल न्यूज आर क्यूज आर नॉट सो बैड. There is no further big news, bad news that we are anticipating here, right? And very importantly, mid cap and small caps, they have been underperformers for last many months, and unka share as a percentage of total market capitalization is at historically low levels. इतना लो लेवल कम बहुत नहीं होता नॉर्मली जितना उनका आज की डेट में शेयर है, आज की डेट में शेयर है मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का. सो गुड पॉसिबिलिटी दैट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स कैन run in the days and weeks and months to come, right? And come to the mean reversion, come to their normal levels. So let's see, we don't know what happens, but these are our analysis and our projections. God knows, markets know, market have the mind of their own. क्या होने वाला हमको नहीं पता, but ये हमारा एक फेयर प्रोजेक्शन है. तो दोस्तों आगे से आगे बात करते हैं टेक्निकल्स की. एंड बिफोर आई गो देयर, लेट मी state a very clear disclaimer. This video is only for educational purposes. I am not a SEBI registered advisor.
एनीथिंग आई से, मैं कुछ भी बोलता हूँ वो किसी मार्केट में किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय या सेल करने की एडवाइस नहीं है. प्लीज अपना एनालिसिस करें, कनेक्ट विद सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, राइट. आई एम डूइंग दिस एनालिसिस फॉर माई सेल्फ एंड आई शेयर इट फॉर द लार्जर गुड इन with all the good intent, right? Okay. ये निफ्टी का डेली चार्ट है फ्रेंड्स, एंड आई मार्क सम लेवल्स. राइट नाउ वी आर एट अराउंड 17350 levels, 359, right? And I feel, see the levels that are marked in red are the levels where I feel nifty could range between, while there are other levels जो हमने मार्क किए हैं which are can be the support and resistance levels. So there is a resistance that is markets might face at 17500 530 levels, right? I feel markets should trade between 17800 levels to on the upper side and 17200 levels on the lower side for this coming week. सिमिलरली अगर हम बात करें, ऑप्शन चेन की बात मैं आज नहीं करूंगा, बैंक निफ्टी की, तो उसके लेवल्स भी ऐसे ही हैं, क्योंकि आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो विल नॉट टॉक ऑप्शन चेन टुडे, बट आई एम गिविंग यू लेवल्स ऑन द बैंक निफ्टी ऑल्सो. सो बैंक निफ्टी के लेवल्स जो है 42,000 आई फील ऑन द हायर साइड एंड 39,300 ऑन द लोअर साइड शुड होल्ड, right? But as such, maximum I feel market, if the 42,000 breaks, it could go to 43,100 also, right? On the lower side, if 39,300 breaks, 38,600 is the next strong support. But my belief is market should stay between 39,300 on the lower side and 42,000 on the higher side. So friends, this was my analysis for this week. I hope you liked it. I hope you find it meaningful. Thank you for sharing your time with me, for staying with me, for your likes, your comments. Do not forget to subscribe this channel, stockincome.in, in case you've still not done it, and press the notification icon. And of course, do share this channel with other friends who will, I'm sure, find it very useful and meaningful. Till we meet next, thank you. God bless. Jai Hind.